everyone. So, in the previous lecture, we learned about the Harappan economy in the mature phase. So, in the mature phase, according to Rita Wright, there are three characteristics of the Harappan economy. That is, पहला है intensification. Intensification मतलब उत्पाद बढ़ जाना. The number, the quantity of both agriculture और craft दोनों का quantity बढ़ जाना. तो पहला is intensification. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है डाइवर्सिफिकेशन. सो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब अब जो पहले अगर एक टाइप की क्रॉप उगाई जाती थी तो अब बहुत सारी तरह की क्रॉप्स, देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स. डाइवर्सिफिकेशन मतलब देर इज अ डेवलपमेंट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स. So because of intensification and diversification, we see that Harappan economy, there is specialization. Specialization means हमने एग्जाम्पल देखा था कि diversification, these two led to specialization. Specialization, if a farmer who used to work in a field, वो फील्ड में भी काम करता था और वो क्राफ्ट्स भी बनाता था, तो नाउ बिकॉज आउटपुट बढ़ गया है, ही कैन प्रोड्यूस मोर इन द एग्रीकल्चर फील्ड. सो वो एग्रीकल्चर को अब अपना मोर टाइम देगा और जो क्राफ्ट और ये सब एक्टिविटीज है इनको वो फुल टाइम स्पेशलिस्ट के लिए छोड़ देगा. फुल टाइम स्पेशलिस्ट के लिए छोड़ना मतलब जो क्राफ्ट्समैन है, जो आर्टिजन है, जो अब इस चीज में स्पेशलाइज हो गए हैं, उनके लिए अब वो ये छोड़ देगा. तो नाउ क्राफ्ट, अभी एक आदमी मल्टीपल काम नहीं करता था, एक आदमी वॉज फोकस्ड, ही वॉज स्पेशलाइज्ड इन वन टाइप ऑफ वर्क. सो अ फार्मर वुड ओनली फार्म and the craftsmen would produce different types of crafts. So when we look at the agriculture of the Harappan period, we see that कल्टिवेशन ऑफ राबी मतलब जो सर्दियों में उगाए जाने वाली क्रॉप्स है, जैसे वीट, बार्ले, चिकपी, सेसमे, मस्टर्ड, इनका कल्टिवेशन बहुत ज्यादा होता था. बट इन द मेच्योर फेज वी सी दैट द डिफरेंस, एक और जो डिफरेंस है बिटवीन द अर्ली एंड द मेच्योर फेजेस, कि इन द मेच्योर फेज वी सी दैट खारिफ क्रॉप्स जो गर्मियों में उगाई जाती है, जैसे मिलेट और राइस, इनका भी प्रोडक्शन देखने को मिलता है. There are different regions in the mature phase. There are different sites which use different techniques, not just for irrigation, of cropping also. In कालीबंगन में हम देखते हैं कि एक फील्ड मिलती है जहाँ पे टू सेट्स ऑफ फरोज आर क्रॉसिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स फॉर्मिंग अ ग्रिड पैटर्न. सो एक ग्रिड पैटर्न हमको क्या दिखाता है कि कालीबंगन में मल्टी क्रॉपिंग मेथड वाज अडॉप्टेड, मतलब एक ही फील्ड पे सेम टाइम पे दो तरह की क्रॉप्स उगाई जाती थी. So this is a new technique that has been adopted in a plough field has been revealed in Kalimangan, and we see a terracotta model here, terracotta plough model which has been discovered in Banavali. So this model that you see in the PPT, that is of it's a terracotta plough model and it has been excavated from Banavali. Now the agriculture doesn't mean that Harappan, the people who lived in the mature Harappan phase, they gave up on hunting and gathering. They still hunted, they still domesticated animals, and they still gathered plant produce. So domesticated animals which are found at the site, जो हमें मिलते हैं वो है cattle, buffalo, sheep, goat, pig, camel, elephant, dog, cat, etc. Cattle meat was preferred and buffaloes must have supported through the evidence जो हमें मिलता है excavation से, that buffaloes must have supported agriculture. The presence of horse, although is considered controversial, hunting of animals was an important activity still. Even in the mature Harappan phase, hunting was an important activity and food gathering was also practiced. Thus, from this we know that the different kinds of subsistence activities adopted by the Harappans, we know that they did hunting, gathering, domestication of plants, agriculture as well. So they depended on multiple subsistence strategy. So their economy was that they depended on multiple subsistence strategies. To sum up their economy, we will say that the Harappan in the mature phase depended on the multiple
subsistence strategies. This was done to mitigate risk. Mitigate risk मतलब risk कम करने के लिए, क्योंकि if by chance the crops fail that time, there is a drought or there is no there is no space to grow, they couldn't clear the land, whatever reason it is, if the crops fail, they can depend on hunting. So now let us look at the crafts. These are the list of crafts that we are going to look at that mature Harappans people specialized in. So these crafts are pottery, metallurgy, bead making, faience, stoneware, bangles, lithic, stone industry. Lithic means stone. Shell processing, seal making, weights and measures. These are some of the types of crafts that the Harappans engaged in. We see intensification in this craft of the हरप्पन पीपल. इंटेंसिफिकेशन मतलब अब क्राफ्ट बहुत बड़े स्केल पे बनाई जाती थी. बहुत जो आउटपुट, द क्वांटिटी ऑफ द क्राफ्ट प्रोड्यूस, द क्वांटिटी ऑफ पॉटरी प्रोड्यूस वाज इन अ लार्ज स्केल. So the most common pottery occurring in Harappan cities is the redware. So in this redware pottery, it is made on wheel and it is a baked pottery. There are both plain and decorated pots. Ochre was used to produce red color. Ochre was used to produce red color for painting, and black was manufactured by combining the dark reddish brown iron oxide with black manganese. So ochre used to give the color red, and the black which is you can see that is painted on this pot is a combination of iron oxide and black manganese. They used to the paintings or motifs were executed जो इसमें बने हुए हैं ये pots के ऊपर, they were executed in the black color and they were mostly geometric or naturalistic. Geometric मतलब lines, crisscross, these type of geometric patterns, and naturalistic मतलब वो people leaves बनाते थे, fish scales बनाते थे, geometric में वो intersecting circles बनाते थे. These kind of patterns were made. Now let us come to metallurgy. So these are some copper plates that have been excavated. So Harappans were aware of copper, gold and silver metallurgy, three types. Copper was widely used and it occurred in the form of weapons, agriculture tools, carpentry tools, ornaments and other objects. So copper का बहुत wide use होता था इस period में. That and also a study of these objects, जब हम आर्कियोलॉजिस्ट इन ऑब्जेक्ट्स को ध्यान से स्टडी करते हैं तो दे नो दैट हरप्पन न्यू टेक्निक्स लाइक फॉर्जिंग, सिंकिंग, हॉट एंड कोल्ड, वेल्डिंग. Such type of techniques were available at that time, and there were people in the mature Harappan phase that were specialized in these kind of techniques. Now let us look at bead making. So the most famous artifacts that were manufactured by Harappans are beads. The beads of both precious metal and semi-precious stones were made. We have also beads of terracotta. The most significant development in the mature phase is use of the hard drill to perforate semi-precious stones. So hard drill की वजह से वो जैसे ये छेद दिख रहे हैं और इन सबको जोड़ने के लिए जो छेद हो रखे हैं वो स्टोन्स में वो ड्रिल की वजह से हो पाते थे. The famous 36 long barrel cylinder carnelian bead might have taken 480 days to produce. This means that their craft was a highly specialized activity. They were expert, skilled craftsmen who were producing these type of crafts. Bead making workshops have been recovered from Mohenjo-daro, Chanudaro, and Lothal. Now let us look at stoneware bangles. So according to Kenoyer, it is an item that may be closely associated with the ruling class. मतलब ये जो bangles excavate हुए हैं ये रूलिंग क्लास या जो एलीट लोग थे हरप्पन के मैच्योर फेस में ये उनसे एसोसिएटेड है, क्योंकि फॉर सम रीजन these bangles have only been discovered in some sites of Pakistan, that are Mohenjo-daro, Harappa, Balakot and Nausharo. The stoneware item is a misleading ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि इसका नाम तो है स्टोनवेयर बट ये स्टोन से नहीं, ये टेराकोटा से बनता है. इसलिए अगर कोई पूछे द स्टोनवेयर्स आर मेड फ्रॉम टेराकोटा.
Dilip Chakravarti points out that the occurrence of these in small sites like Navsharo may not support the claim of them being associated with the elite. So on the one hand, Kenoyer is saying that these type of bangles are associated with elites, बट दिलीप के चक्रवर्ती सिंह कि क्योंकि इतनी थोड़ी सी साइट्स पे पाए जाते हैं, क्योंकि एलिट्स तो सब जगह ही होंगे, तो अगर इतनी थोड़ी सी साइट से और पर्टिकुलर रीजन से पाए जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये एलिट से ही एसोसिएटेड हो. Now let us look at the stone industry, the lithic industry. So the advent of metals, Harappan people, they knew metals, they knew metallurgy of both of copper, gold and silver. They knew the metallurgy, the techniques, but this doesn't mean, इसका मतलब ये नहीं है कि stone tools बंद हो गए थे. Harappans continued to use stone blades and bladelets. Several workshops manufacturing them were located near the Sukur Rohri hills in the northern Sindh area. Now let us look at the shell processing. A wide variety of shell objects. तो shell से क्या क्या बनता था? Shell से बनते थे बैंगल्स, स्पून्स, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, जो बहुत सारी इंडस साइड से पाए गए हैं. They were also made of conch from the Kutch coast and Khambat coast. से इन्हें conch, ये जो मटेरियल है शेल का एक टाइप का conch, वो उन्हें मिलता था, उससे लोग बहुत सारे तरीके के ऑब्जेक्ट्स बनाते थे. बट ये जो मटेरियल है conch, ये मिलता तो कच्छ और खंबात कोस्ट में था, बट हम लोग शेल के प्रोडक्ट्स तो ऑल ओवर द इंडस साइड्स देखते. तो इसका मतलब ये है कि जो रॉ मटेरियल्स थे, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे वर वैल्यूड एज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड आइटम, बिकॉज उनका ट्रेड कंटिन्यूसली हर जगह होता है. बेशक वो मिलते एक दो तीन, मतलब ये जो कोस्टल एरियाज है यहाँ से मिलते हैं, बट दे आर exported and they are exchanged throughout the Indus sites. Now steatite. Let us come to steatite. So steatite was mainly used for manufacturing seals like these. Seal making workshops are known from Harappa and Lothal. A variety of animals were depicted in the seals. Sometimes mythical animals were also depicted in the scene. Like ये seal में जैसे one horned unicorn है, one horned unicorn, horned tiger, horned elephants. These type of mythical animals were also depicted. Now let us come to weights and measures. So the Harappan had a standardized system of weights and measure. Most weights were cubical in shapes and they were made of shirt, this material. We also have a few specimens made of agate and jasper. The weights increased in 1 to 64 multiples of 0.87 grams. So there we see that here the weight is increasing. For linear measurement, we know scales of shell. These are the scales. Scales of shell, ivory and copper were excavated from Mohenjo-daro, Lothal and Harappa. Now let us come to the drainage system. So one of the most impressive characteristic of the Harappan settlement is their drainage system. Sites like Harappa, Kalibhangan, Navsharo, Chanudharo, Dholavira, Lothal have given evidence of elaborate drainage facilities. The specific feature of this elaborate drainage system, ये system इतना elaborate कैसे है, क्यों, कैसे, तो उसका reason है कि ये system बहुत सारी जगह से वाटर मैनेजमेंट करता था. कैसे? जो घर का वेस्ट वाटर है इनसाइड द हाउस, ये वेस्ट, ये उसको भी मैनेज करता था. वर्टिकल ड्रेन्स, पाइप्स इन द वॉल. सो देयर वर वर्टिकल पाइप्स इन द वॉल जहां से पानी ड्रेन होते हुए नीचे आता था और वो फिर एक शूट्स के थ्रू स्ट्रीट्स में जाता था. ड्रेन्स फ्रॉम द बाथिंग फ्लोर, फ्रॉम द बाथरूम ऑल्सो जो ड्रेन्स है वो स्ट्रीट में जाती थी. एंड द स्ट्रीट ड्रेन्स एट ऑल साइड्स वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ड्रेन. These are made of baked bricks and they are approximately 1 meter in height and 0.9 approximately 95 centimeter in the breadth. So these were the drains. The street drains were made up of baked bricks. We have evidence of the use of gypsum and lime
प्लास्टर इन द बॉटम ऑफ द ड्रेन। सो जिप्सम और जो प्लास्टर है वो ये ड्रेन्स के बॉटम में लगाया जाता था ताकि पानी लीक होके कहीं और ना चला जाए। और मोस्ट ऑफ द ड्रेन्स वर कवर्ड विद ब्रिक एंड स्टोन। सो ये ड्रेन तो खुली है बट मोस्ट ऑफ द ड्रेन्स जो होती थी उनको ब्रिक और स्टोन से कवर्ड भी किया जाता था। बाथ्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस। और जब एक्सकेवेशन हुआ तो पता चला कि जो बाथरूम्स बनाए गए थे हरप्पन हाउसेस में, दे वर मेटिकुलसली कंस्ट्रक्टेड, मतलब बहुत डिटेल्ड से उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे बाथरूम के एक स्लोप होता था। वो स्लोप कैसे बनता था कि एक साइड से ब्रिक्स जो है वो रेस्ड है, थोड़ी ऊपर है, और वो जैसे 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 दूसरी साइड पहुंचेगी तो ब्रिक्स नीचे है, तो एक स्लोप जैसा बनता था बाथरूम में, जैसा आजकल के बाथरूम्स में भी होता है, ताकि पानी एक जगह आ सके। द फ्लोर ऑफ द बाथरूम वॉज स्मूथ फिनिश्ड, इट वॉज coated with a plaster of lime, so the bathroom floor was very smooth, and the water from the bathroom used to go through the pipes into the drainage system that is in the streets. So very elaborate drainage system we find at the Harappan sites. Now let us look at the art. Most of the human figures that we see are handmade and are made from material like bronze, terracotta, steatite. In Indus civilization, it is not very much rich in art. इतना ज़्यादा हमें art का वो नहीं दिखता है. We have recovered human as well as animal figures. The female figures are adorned. Female figures जो हैं उन पे elaborate ज्वेलरी दिखती है हमें, जिसका एक एग्जाम्पल है डांसिंग गर्ल. So this dancing girl is approximately 11.25 centimeter in height, and it depicts a slim girl जिसका एक हाथ, one hand, she is wearing a necklace and her one hand rests above her knee, this one, and one hand is on her waist. So the left hand is completely covered with bangles while the right hand has 4 bracelets. She has her hair tied in a bun. She is wearing a necklace. She is wearing pendants. Her pose, अगर हम उसका pose देखें तो she is not dancing, but John Marshall named her the dancing girl. So another important sculpture that we find is the priest king. Priest king. It is a male figurine which is about 7 inches in height. The eyes of the figure are half closed and the focus is on the tip of the nose. He is wearing a shawl. उसने एक shawl पहना है जिसमें कुछ motifs बने हुए हैं. We have also discovered many animal figurines from the site of Harappa. Now let us look at trade. So Harappan engaged in both internal as well as external trade. So internal trade में wide variety, बहुत सारे goods trade किए जाते थे. So shell from the art section we know that shell making में कि जो shell माकरन और कच्छ के कोस्ट पे मिलते थे वो हरप्पा की different साइट्स में जाते थे, और फिर स्पेशली जो हरप्पा साइट है पाकिस्तान में वहां पे जाते थे और वहां पे उन शेल से बैंगल्स बनते थे. सुक्कर रोहरी हिल्स, ये भी एक साइट है विच प्रोवाइडेड शर्ट एंड ब्लेड्स. The actual trade routes can be inferred by locating the sources of raw material and understanding the location of the site. So जहां से raw material बन रहा है और जिस साइट पे वर्कशॉप है उनकी जहां पे वो raw material से the craft they are making, तो उससे हमें ट्रेड रूट पता चलता है कि इस रास्ते से होते होते यहाँ तक फाइनली पहुंचे हैं वो रॉ मटेरियल. So there are various trade routes. The site in Sindh further supplied materials like shell and flint stones to the site in Punjab. Now, let us look at the external trade. Indus civilization might have interacted and exchanged goods with contemporary civilization. So an important export item to the Mesopotamian cities was a long barrel cylinder and carnelian beads. So इंडस civilization से मेसोपोटामिया में लॉन्ग बैरल सिलेंडर्स गए हैं, क्योंकि उर में एक ग्रेव है, एक रॉयल ग्रेव है, वहां पे हमको मिलता है कि एच कार्नेलियन बीड्स
नॉर्मल कार्नेरियन बीड्स और बैरल सिलेंडर्स ये सब मेसोपोटामिया में प्रोड्यूस नहीं होते थे, तो ये सब हर इंडस साइट्स में प्रोड्यूस होते थे। और ये उर जो मेसोपोटामिया में है उधर की रॉयल ग्रेव्स में दिखे हैं। द मेसोपोटामियन टेक्स्ट tells us about trading link with Dilmun, मगन एंड मेलुहा। ये तीन साइड से हमें ट्रेडिंग पता चलता है कि मेसोपोटामिया की ट्रेडिंग ये तीन साइड से होती थी। तो दिलमुन is now present day Bahrain. We know that it has been identified by the present day Bahrain. Magan is the Makran coast. Makran coast. This is Dilmun is Bahrain, and it is assumed by archaeologists that मेलुहा इज अ साइट। उनके टेक्स्ट में, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ऐसा लिखा है कि मेलुहा से उनको मिलता था कॉपर, टिन, एबनी, गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, ये सब चीजें उन्हें मेलुहा से मिलती थी। इट इज नॉट क्लियर वेदर मेलुहा इज हरप्पन और नॉट, बट डी के चक्रवर्ती आर्ग्यूज दैट जो मटेरियल्स इन्वॉल्व है, जो जो मटेरियल्स वो टेक्स्ट में लिखा है कि कार्नेलियन बीड्स, लैपिस लजुली, ये सब जो एरियाज है ये मेसोपोटामिया के ईस्ट में आते हैं। और मेसोपोटामिया के ईस्ट में है हरप्पा, रिफर टू द एरियाज ईस्ट ऑफ मेसोपोटामिया, नहीं ना कि हरप्पा। So D.K. Chakrabarty, according to D.K. Chakrabarty, the Meluha, that the site that the Mesopotamian text is referring to is not Harappan civilization. Carnelian beads from Harappa were also exported to the sites of North and South Iran. Besides West Asia, Harappans also traded with Afghanistan and Central Asia because lapis lazuli जो Harappan sites में मिलता है, it came from Afghanistan, and tin which is found at the Harappan sites came from Central Asia. Now, here comes the debate on Harappan polity. Did Harappan had a huge empire? Did they have different kingdoms? Did they had an autocratic rule or a corporate rule? We don't know. So there are different debates by different archaeologists. Wheeler and Stuart Pigott states that the empire was ruled by an autocratic priest king, which helped by it was the priest king was helped by an efficient bureaucracy. तो व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ऐसा कह रहे हैं कि हरप्पा में एक ऑटोक्रेटिक प्रीस्ट किंग था एज वेल एज एक ब्यूरोक्रेसी थी। बट Faizer-Weiss is saying that to have such kind of bureaucratic rule, you need centralized government, centralized form of polity. But to have such kind of centralized rule, one needs military enforcement, और हमें हरप्पन सिटीज में ऐसा कुछ मिलिट्री कैरेक्टर का कुछ भी नहीं दिखता है। Instead of this uniformity of cities, S.C. Malik is saying that ये जो uniformity हमें दिखती है इतने सारे हरप्पन sites में, it is because of religious ideology, because all of them followed the same religious ideology, they had the same religious ideology, इसीलिए इतनी uniformity हर site पे दिखती है। अब M. Kenoyer is saying कि हरप्पा में both state level and chiefdom level polities हैं। He is saying that sites जो बहुत बड़ी हैं उनमें स्टेट लेवल पॉलिटी है, और साइट्स जो छोटी हैं रिमोट एरियाज में उनमें चीफडम लेवल का रूल है। He further argues that urban settlements like Harappa, Mohenjo-daro, Rakhigarhi, they are independent. They could have been independent city states, where in independent city states जो urban elite होते थे वो पावर के लिए compete करते थे। तो according to M. Kenoyer, हरप्पा, मोहनजोदारो और गनेरी वाला दे कुड हैव बीन इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स, और यहाँ पे कोई स्टेट या चीफडम लेवल का पॉलिटी नहीं, इधर जो अमीर जो अर्बन इलीट लोग हैं वही पावर के लिए compete करते थे। सो इन द एंड हम कह सकते हैं कि देर वॉज सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी और सम काइंड ऑफ स्टेट दैट एग्जिस्टेड इन द हरप्पन सिविलाइजेशन, although we should know that the political authority that was present in the Harappan civilization was very much different from that which was present in Mesopotamia or Egypt. They had, why do we know and why do archaeologists assume कि उधर कुछ ना कुछ कोई ना कोई
कोई ना कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी तो होगी, क्योंकि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर दिखता है। जो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हमने मोहनजोदारो में देखे, जैसे सिटाडेल, द ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल, दीज बिग स्ट्रक्चर्स, इनको बनाने के लिए भी लेबर पावर चाहिए था, और वो लेबर को कहीं ना कहीं से तो लाना ही पड़ेगा। तो देर वॉज अ लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन लेबर का टू कंस्ट्रक्ट दिस पब्लिक वर्क। देर इज क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, देर इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, हर जगह सेम स्टैंडर्ड्स के वेट्स और मेजर्स यूज होते थे। There is establishment of trading outposts like Shortugai. Shortugai is a site in Afghanistan. उतना दूर तक ट्रेड करना, it is not possible. All of these things are not possible without a political authority. So that is why in the end we can say that कि कुछ ना कुछ टाइप का political authority था. What was that? We don't know. We have different debates on that. All these elements indicate a complexity. इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम था हरप्पन साइट्स में, और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ पॉलिटिकल अथॉरिटी. So now let us look at the religion. So John Marshall, according to John Marshall, the religion in Mohenjo-daro and Harappa have some similarities between present day Hindu religion. क्यों? क्योंकि one of the seals that was discovered were, according to John Marshall, he identified him as the seal as proto Shiva, type of Shiva. This why? Because this seal that we are seeing, it has a male figure which is seated on a dais. His arms are covered with bangles, and he is sitting in a position which is very similar to a yoga asan, which is known as mulaband asan. So it is an asan in yoga, and this figure is sitting in the same asan. The historic Shiva that from the Hindu religion is associated with yoga, and he is known as Mahayogi. So John मार्शल ये सिमिलैरिटीज बोथ हरप्पन और हिंदू रिलीजन में ही स्ट्राइक, वो ये कोशिश कर रहा है कि वो ये सिमिलैरिटीज दिखा सके। जैसे हरप्पन सील में ये जो फिगरिन जैसे बैठी है, ये एक योगिक पोस्चर में बैठी है, और हिंदू रिलीजन में शिवा को महायोगी कहा जाता है। तो ही इज ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट दी सिमिलैरिटीज. द फिगर इज सराउंडेड बाय 6 animals, and 6 animals which are elephant, rhinoceros, water buffalo, tiger, and ibexes slash antelopes. We are not sure whether they are ibexes or antelopes. So on the basis of this, he interpreted that this is the lord of animals or Pashupati. However, this proto Shiva theory has been contested. बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो इसमें बिलीव नहीं करते. Besides the presence of a male deity, John Marshall ने ऐसा कहा कि there is in Harappan sites, according to him, mother goddess worship भी होता था in Indus civilization. Harappans also might have worshipped people trees. One seal depicts 7 figures paying obeisance to a tree. मतलब एक सील मिली थी हरप्पा में जिसमें ऐसा दिखाया था कि 6 लोग एक ट्री को प्रे कर रहे हैं. A horned figure stands on the tree, and some scholars argue that this scene is the reminiscent of the later day Saptamatrikas. और some even identifies these जो 7 लोग वो हरप्पन सील में वो पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं. सम आर्कियोलॉजिस्ट उन 7 लोगों को सप्तऋषि फिगर से आइडेंटिफाई करते हैं. So now we are done with the mature Harappan phase. We know that it was a mature Harappan phase. It was Indus civilization was a huge civilization which maintained a uniformity for almost 500 years. बहुत complex society थी, trade थे, they had religion, they had some kind of political authority. It was a very complex society. And in the next lecture, we'll learn about the decline of the Harappan civilization. If you have any questions, you can ask in the comment box. Thank you.